So, dear students, in the last module, we discussed about Ohm's law. So, in that Ohm's law, we discussed about resistance. Resistance is interference in the flow of electrons or flow of electric charge. So, what are those interferences? Or what are the factors that can affect that interference? Because the most important factor on which resistance of a conductor will depend is its nature. In this module, we will discuss about the factors that can affect the resistance of a conductor. Resistance is interference in the flow of electron. So, what are those factors? First is most important factor. वो बना किस चीज का हुआ है? The nature of substance. Second is the length of the conductor. कि मान लो हम कोई मेटल की वायर लेते हैं तो उसकी कितनी लेंथ है. Third is area of cross section. Fourth is temperature. So first factor is nature of substance. So the meaning of nature of substance is कि वो जो हमने मेटल की वायर ली है या कोई और सोल्यूशन भी अगर हमने लिया है तो उसका नेचर क्या है, वो बना किस चीज का होगा. तो फॉर एग्जांपल लेट्स कंपेयर सिल्वर एंड lead, Ag and Bd. Silver is the best conductor of electricity. Why? Because it has minimum resistance. इसकी resistance जो है कम है. Lead is the poor conductor of electricity because it has high resistance. तो length, area, वो temperature हम कितना भी change कर ले, but the most important factor will always be the nature of substance. वो बना किस चीज का होगा. So silver is the best conductor because it has least resistance. Lead is the poor conductor because it has maximum resistance. Next is the length of conductor. Resistance is directly proportional to the length of conductor. Resistance क्या है? Directly proportional है length of conductor के. जितनी लंबी वायर लेंगे हम उतनी ज्यादा उसकी क्या होती जाएगी, resistance. If you compare, let's assume these are the two wires made up of same material. तो इसकी length कम है, इसकी length ज्यादा है. So by seeing on these two wires, length is more, resistance is more. Length is less, resistance is less. Next is area of cross section. So resistance is inversely proportional to the area of cross section. The meaning of area of cross section is the thickness of wire. जो हमने वायर ली है उसकी thickness कितनी है. So how we can find out the thickness? Let assume this is the wire. ये जो एरिया है इसका, जो थिकनेस है इसकी, वो हमारी, जैसे हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो वायर है वो हमारी क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी या सर्कुलर है जैसे ये. तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर. और द मोर सिंपलर वे इज द थिकनेस ऑफ वायर. वायर अगर थिक ज्यादा है तो एरिया विल बी मोर. इफ एरिया ऑफ वायर इज मोर, रेजिस्टेंस इज लेस. अगर हम ज्यादा मोटी वायर लेंगे या थिक वायर लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी. और हम पतली वायर लेंगे, इन दैट केस द थिन वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस, resistance will be more. Next, one of the important factor is temperature. Resistance is directly proportional to the temperature. The effect of temperature on the resistance we will also discuss in the heating effect of electric current. At this point of time, I will only discuss the basic thing. As we already know, kinetic energy is directly proportional to the temperature. अब होता क्या है कि जब हमारे पास, मान लो ये हमारे पास कोई एक वायर, in that wire positive kernels, dots are representing electrons. When we pass the current is what? A form of energy. तो जब हम एनर्जी पास करते हैं तो वो क्या होते हैं, जो पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज मोर, टेम्परेचर इज मोर. लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, रिवर्स इफेक्ट पढ़ना है. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर इज मोर, रेजिस्टेंस इज मोर. अब रेजिस्टेंस क्या है, इंटरफेरेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे, ये कहाँ जा रहे हैं, लेट अस अज्यूम ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल. दे आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर direction. We are increasing the temperature. Let us assume
आजकल का टेम्परेचर है, समर सीजन है, टेम्परेचर ज्यादा है. इफ टेम्परेचर इज मोर, काइनेटिक एनर्जी इज मोर. तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इन पॉजिटिव कर्नल्स की. इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव कर्नल की भी इंक्रीज होगी. लेट अज्यूम दिस इज द पॉजिटिव कर्नल, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. कि जब नॉर्मल टेम्परेचर है वो इस फ्रीक्वेंसी पे वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है. और इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो करते हैं और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे. अब बाय चांस समर सीजन है और वो टेम्परेचर इज अप मोर. इफ टेम्परेचर इज मोर, the vibration is more, frequency is more. In that case, the interference will be more. ये अगर वो ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से पास होंगे या पास से उसके नियर बाय से पास होंगे तो उसको इंटरफेरेंस जो है वो क्या होगी? ज्यादा रहेगी. So this is the effect of temperature on the resistance. So factors which can affect the resistance of a conductor is: first is nature of substance, the most important factor. Second is the length of conductor, directly proportional. Third is area of cross section, inversely proportional. Next is the temperature, which is directly proportional. Next is we have to combine these two parameters, length and area. So for the length and area, so R is directly proportional to the L. Second is R is inversely proportional to the area. Now combine these two. R is directly proportional to the L by A. So when we open this proportionality, R is equal to rho L by A. What is rho? Rho is the proportionality constant. जब आप इसको ओपन करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक इक्वल टू. सो R इज इक्वल टू रो L by A. L is the length, A is the area of cross section of conductor, R is the resistance. So what is rho? Rho is the proportionality constant, and more specifically it is called electrical resistivity or specific resistance of a particular substance. So in board exam you will get a question: define electrical resistivity, derive its unit, and on which factor the resistivity of a conductor depends. Generally 3 marks question, based 1 marks for definition, 1 for deriving the units, and third is for the factor affecting the resistance. So we will discuss them one by one. So first is define electrical resistance. First write this expression: R is equal to rho L by A. How we can define? Let's assume L is 1 meter. The length of our conductor is 1 meter. Area of cross section of that conductor or wire is 1 meter square. So in that case, R is equal to rho into 1 by 1. In that case, R is equal to rho. So how you can define the electrical resistivity or specific resistance? Electrical resistivity or specific resistance is equal to the resistance of a conductor or resistance of a substance when length and area of cross section of that particular substance is unity. The meaning of unity is 1. जब length और एरिया दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1. और यू कैन ऑल्सो राइट रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. और यू कैन राइट द अदर डेफिनेशन. बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस. सो दिस इज द definition of electrical resistivity or specific resistance. Next is how we can derive the unit of electrical resistivity or specific resistance. R is equal to rho L by A. So rearranging the formula, R into A is equal to rho L. Now rho is equal to R into A by L. So this is the formula of specific resistance or electrical resistivity. Now how we can derive the unit? Rho. What is the unit of R? Ohm. What is the unit of area? Meter square.
What is the unit of length? Meter. Cancelled. So rho will be equal to ohm meter. So the SI unit of specific resistance or electrical resistivity is ohm meter. Next part is what are the factors that can change the resistivity or electrical resistance. So most number of time students write the wrong answer because they have already made up their mind. The R is directly proportional to the L, R is inversely proportional to the area. So but rho depend on only two factors. First is the nature of substance. Nature of substance means whether the substance is conductor, insulator, semiconductor. So this rho is mainly depend on two factors. Rho is nature of substance. Second is temperature. As the temperature is more, resistivity is more. Then second factor is nature of substance. कि वो बना किस चीज का हुआ है. Whether the substance is conductor, insulator, semiconductor, alloy है, क्या है वो, ठीक है. So the value of resistivity is more for insulator and less for conductor, and semiconductor in between the conductor and insulator. So in this module we discussed about the what are the factors that can affect the resistance of conductor. First is nature of substance, the most important one. Second is length of conductor. Resistance is directly proportional to the length. Area of cross section, कि wire की thickness कितनी है. Fourth is temperature. The effect of temperature we will discuss more in heating effect of electric current. So next is when you combine these two parameters, R is directly proportional to the L and R is inversely proportional to the area. You will get one more factor which is called one more parameter which is called electrical resistivity or specific resistance. We discussed about how we can define specific resistance or electrical resistivity, how we can derive the unit. The unit of electrical resistivity is ohm meter. And next is what are the two only factors that can affect the electrical resistivity. So they will confuse you in the board exam. वो बोलेंगे कि एक वायरली हमने उसको लेंथ को इंक्रीज कर दिया, उसकी एरिया को हमने डिक्रीज कर दिया, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो और रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करो. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी क्योंकि हम लेंथ और एरिया को चेंज कर रहे हैं, बट देयर विल बी अ हिंट. वो सेम मटेरियल का सब्सटेंस को हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया. तो इन दैट केस unless nature of substance is changed, unless the material is changed, कि सिल्वर वायर से कोई और वायर ले ली, तब तक जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी की इट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होने वाला. सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, केयरफुली रीड द क्वेश्चन. वो लेंथ चेंज करेंगे, वो एरिया चेंज करेंगे. तो लेंथ और एरिया चेंज करने से रेजिस्टेंस तो चेंज होगी, बट देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. We will also discuss the numericals related to the resistance and resistivity. Then the factor affecting will be more. So this is what all about the factor affecting the resistance of a conductor. Thank you, students.